Good evening, everyone, and welcome to Shalini Diwan Talk Show with Health Ki Baat, episode 6. And today we are going to be talking about cancer and kidney diseases. With cancer, the name cancer actually sends in a panic, and at times we don't know whom to contact or get the right information. So, always the right information from the right sources is very important, and that is what we are going to be showcasing in our episode today. So, before we go further, let me introduce our guest doctor speaker for the day. That's Dr. Aditya Sarin. Welcome, Dr. Sarin, to the show. Thank you, ma'am. Thank you so much. Yeah, Dr. Sarin is a medical oncologist at BLK Max Hospital. And then I introduce to you Dr. Bhanu Mishra, our resident doctor, who is a nephrologist at BLK Max Hospital. So, welcome, doctors, to the show. Thank you. Thank you for calling us. Okay, so Dr. Sarin, I would like to ask you, who is an oncologist? Because people at times don't know. And when and why do we need to see an oncologist? Oh, so to be very honest, this is something that I come, day-to-day basis, and people are still very confused regarding the term oncology. So we have three major branches. One is the medical oncology, who deals with the therapy part of it, which can be chemotherapy, immunotherapy, or the targeted therapy. Then we have a surgical oncologist, a surgeon who specifically operates on all the cancers, whether it's a benign or a malignant one. And then we have a radiation oncologist who deliver the radiotherapy. So in a whole, there are three oncologists right there. One is medical, then is surgical, and then is radiation oncology. Perfect. So, and then doctor, this is very well explained, but what is cancer? So, okay, cancer in term, it encompasses like somewhere around 250 cancers, and we have like two major broad classification of this. One is benign cancer, which are only limited to a part, and they just keep on growing in size, and only it will cause some pressure issues or heaviness or sometimes pain. So this is something which is mostly being operated upon, and they are like removed by the surgical oncologist. Then comes the worried full, cancer, where a person really does get worried if he is having, which is known as malignant cancers. So the malignant cancer these are just some abnormal cells which have traveled from their original site to various different sites. For an example, if an abnormal cell is there in lung, and if it keeps on multiplying, first it will form a complex in lung, and after some time it will spread to brain, it can spread to liver, it can spread to kidneys, adrenal gland. So those are the cancers who we need to catch early and treat them very early. So the worried branch is the malignant cancers. Okay. So can we prevent cancer? Is it possible? Yeah. So see, apparently the studies that have been done in the most of them are from having data from the Western world, and in Western world they have extensively studied regarding tobacco prevention and good health sexual practices as well. And we do have vaccinations against like cervix and hepatitis B. So in total, if a person is having, once we see a patient, then we assess whether the patient can be given any prophylaxis of the cancer as well. If yes, then we definitely do it. But yes, if I have a good lifestyle modification, and I'm not a fat guy or a fat woman, and especially obesity, it carries a very high association with cancer itself, Okay. So now you are seeing the number of fast food chains are like 1,000 times more than the hospital. They are directly feed us to our branch. I don't want to say this, but apparently obesity is now rampant in India as well. I mean, if you go back like 30, 40 years when there was like World War and independence,
So population was not that much, and the priorities of the life were different. But now the scenario has been completely changed, and obesity, alcohol, tobacco, they are like, I mean, rampant, and we are having the next upcoming pandemic with us, and nobody is giving heed towards us. No, I totally agree with you. पहले, I remember, पहले घर का खाना was the most, that people were having. But आजकल घर का खाना, I think, has taken a back seat, and everybody wants to enjoy, everything that is junk and fast food, and it's a very alarming situation, as you said. Absolutely, absolutely. So, Yeah. so you tell me, when and why do I need to see an oncologist? When do I need to see? When do I, So, first and foremost, if there is any family history amongst the family, then definitely you need to consult a medical oncologist, because there are some genetic markers which can help me identify whether the patient is at a higher risk or whether the patient is at a risk at par with the normal population. Okay. And if I, let's say, for example, if we find like BRCA1 gene or BRCA2 gene and some associated other genes, then we can plan some prophylactic surgeries of breast removal and ovary removal in order to make sure that those kind of cancers should never develop in those high risk population. Okay. And it is not only limited to females. I would like to state this point. And prostate cancer in males is also having a genetic component as well. So first and foremost is, if a family has a relative, first degree relative or a distant relative, then definitely you should seek an opinion from a medical oncologist. Second, And doctor, if you go a little bilingual, थोड़ा हिंदी में भी बोलेंगे तो I think, it reaches the population a little better. So, अगर किसी फैमिली के अंदर आई मीन मदर फादर या दादा दादी, नाना नानी और बुआ मामा, सो ऐसे कहीं पे भी फैमिली के ट्री के अंदर किसी को भी कोई प्रॉब्लम आती है कैंसर की, तो ये फर्क नहीं पड़ता कि आप उनसे कैसे रिलेटेड हो, जस्ट शो टू अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो आपको एक जेनेटिक काउंसलिंग करके आपको जो बेस्ट टेक्निक है वो आपको गाइड करेगा, और वो एक नॉर्मल ब्लड सैंपल से ही पता चल जाता है आजकल हमें कुछ भी एग्रेसिव नहीं करना। Okay, so then my next question actually was this only, कि हम कैसे assess करें genetic risk of cancer? Okay, You were saying about... So आजकल दो तरीके से ये काम किया जा रहा है। एक तो यूएस के अंदर एक एंसेस्ट्री करके प्लेटफॉर्म है, उनका थोड़ा सा काम है कि दे वांट टू नो आपका ओरिजिनेशन किस कंट्री से है, आप कितने परसेंट स्पेनिश हो और आपके ग्रैंडफादर फोर फादर्स कैसे, मतलब आपका जीनोमिक स्ट्रक्चर कैसा बना डीएनए के लेवल पे। एक तो वो काम आजकल इंडिया में शुरू हुआ है, बट उससे हमें ये हेल्प नहीं मिलती जो मेरे फील्ड में मेरे को हेल्प करती है, जो कि होती है डीएनए के अंदर जो जीन्स हमें आइडेंटिफाई करनी होती है। Okay. उसके लिए टेस्ट अलग होते हैं, प्रिस्क्रिप्शन चाहिए होती है, और एक बार हमेशा मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलना बेटर होता है। आई एम टेलिंग यू दिस व्हाई, क्योंकि अगर मान लो मैंने कोई टेस्ट आपको प्रिस्क्राइब किया, ठीक है, Okay. उसका या तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। हाँ जी। ठीक है, नेगेटिव आ गया, आप खुश मैं खुश, लेकिन अगर पॉजिटिव आ गया और फिर क्या करना है ये डिसीजन कैसे कोई लेगा अगर कोई पेशेंट खुद से करा लेता है। सो आपको या पेशेंट की फैमिली को ये सोच समझ के डिसीजन लेना होता है कि भाई हमने जेनेटिक टेस्ट कराना है या नहीं कराना। ये चीज हम लोग इन आवर प्रोफेशन हम असेस करते हैं बाय फेस टू फेस कम्युनिकेशन, जो है डॉक्टर पेशेंट रिलेशनशिप के साथ। ओके, ग्रेट। सो डॉक्टर ये बताइए, व्हाट इज कीमोथेरेपी? ओके, आपने एंटीबायोटिक्स कभी देखे होंगे या ग्लूकोज जैसे चढ़ता है नॉर्मल आईवी कैनुला से, आपने देखा है। इट इज जस्ट एग्जैक्टली द सेम, बट जो क्लास ऑफ ड्रग्स है उनका नाम हम कीमोथेरेपी देते हैं। जो मैकेनिज्म जिस रूट से वो दी जाती है वो बिल्कुल नसों के थ्रू दी जाती है, जो कि कैनुला से भी दी जा सकती है। कभी कभी हम कुछ स्पेशल डिवाइसेस यूज करते हैं जिसको हम पिकलाइन कहते हैं या फिर कीमोपोर्ट कहते हैं। वो थोड़ा एडवांस हो जाएगा डिस्कशन से, क्योंकि एट प्रेजेंट कीमोथेरेपी कुछ भी नहीं है। इट इज जस्ट ग्लूकोज के अंदर या नॉर्मल आईवी फ्लूइड के अंदर मिक्स करके इन्फ्यूजन देना। You have explained it so nicely, doctor, because ये terms इतने scaring हैं
first the cancer itself is very scary, and when then we talk about chemotherapy, तो मतलब ये सब बहुत ही they actually make us panic. तो ये very Yeah. nicely आपने बहुत ही अच्छे से, बहुत सिंपल तरीके से, if you can go a little further और थोड़ा और simplify करके इसको थोड़ा सा extend करके और समझाएंगे, तो I think viewers will like it. तो एक बार मैं अपना एग्जांपल देता हूँ. सो व्हेन आई वाज डूइंग माय ट्रेनिंग इन ऑन्कोलॉजी, सो एक बार एक पेशेंट मेरे पास आते हैं. उसकी फैमिली थोड़ा सा रूरल पॉपुलेशन से बिलोंग करते थे. वो आए और कहते सर कीमोथेरेपी लगा दो. हम जी ठीक है. सो पेशेंट को वी स्टार्टेड विद द ट्रीटमेंट एंड एवरीथिंग वाज गोइंग ओके. थोड़ी देर में पेशेंट का जो बेटा होता है वो मेरे पास आके कहता है सर अब इनको वो जो दिमाग में इलेक्ट्रोड्स लगा के इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं वो कब देंगे. Okay. तो एट दैट पॉइंट आई वाज लाइक है ये कहाँ से आ गया, मतलब ऐसी कोई नई डेवलपमेंट है जो मुझे भी नहीं पता. सो अपेरेंटली जब वो गांव से निकले वहां पे उनको ये कहा गया कि कीमोथेरेपी का मतलब है दिमाग में झटके देना. Okay. That particular and the patient was ready for that. Patient said कि अब मैं सर तैयार हूँ, मेरे को दे दो. मैंने कहा सर आपका ना ट्रीटमेंट वो जो कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं क्योंकि उनकी इंफॉर्मेशन हो सकता है उनको नहीं पता हो, बट वो चीज अलग है. आपको कीमोथेरेपी अलग चीज होती है. इट इज प्योरली जो हम आईवी फ्लूइड होता है उसी में डिसॉल्व करके वो मेडिसिन लेते हैं. हाँ, उन मेडिसिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बहुत वेरी करता है, इसलिए उसको नॉर्मल एंटीबायोटिक के साथ कंपेयर नहीं किया जाता. उसका पूरी क्लास का नाम ही कीमोथेरेपी रखता है. बाकी अगर आप मेरे को कहो कि डॉक्टर सरीन एंटीबायोटिक और कीमोथेरेपी में डिफरेंस बताओ, तो जब तक यहाँ तो मेरे को उसका रैपर ना दिखे तब तक मैं नहीं बता पाऊंगा. Okay. अदरवाइज वो बिल्कुल प्योर आईवी फ्लूइड के अंदर ही जाएगा. Perfect. देखिए तभी मैं आपको कह रही थी ना, इतने मिसकंसेप्शंस हैं, पीपल डोंट नो मच अबाउट इट, और रूरल पॉपुलेशन में तो बहुत ज्यादा अवेयरनेस इसके बारे में स्प्रेड करना बहुत जरूरी है. एंड आई डोंट नो आई मीन वी नीड टू ट्राई, और हमें ये करना बहुत जरूरी है. बट प्रॉब्लम ये है कि द डॉक्टर्स आर ऑल्सो बिजी, एंड क्योंकि इतनी पॉपुलेशन है हमारी कंट्री में दैट इट्स नॉट इजी टू हैंडल the population, and I think the doctor percentage ratio with the population is also not in par with each other. But yes, we are all doing our jobs. I hopefully right. तभी मैं कहती हूँ right information from the right person is so important, rather than talking around with people and getting a misinformation. Absolutely. Right. So doctor ये बताइए, what is an oncology test? So basically oncology test हमें यहाँ पे ये डिसाइड करना होता है कि भी हम अगर किसी पेशेंट के अंदर हमें कैंसर डिटेक्ट करना है तो हमारे पास क्या क्या रूट्स हैं उसको डिटेक्ट करने के लिए. दैट इन्वेस्टिगेशन कैन स्टार्ट फ्रॉम प्लेन सिंपल चेस्ट एक्सरे और एक्सरे मोडालिटी, एंड इट कैन गो टू एज हाई कॉम्प्लिकेटेड लाइक अ डोटा स्कैन. राइट. इसके बीच में जितनी भी इमेजिंग मोडालिटीज हैं वो हमें हेल्प करेंगी ये गाइड करने के लिए कि अगर किसी पेशेंट को कैंसर है या नहीं, नंबर 1. सेकेंडली, क्या वो अपनी साइट पे ही है या वो स्प्रेड कर गया है, और क्या वो कभी कभी कुछ स्पेशल हमारे मार्कर्स होते हैं लाइक PSMA या डोटा, ऐसी कुछ वो लाइट शो करते हैं नहीं करते. तो आजकल इन्वेस्टिगेशन कराना इज नॉट इम्पॉसिबल, इट इज वेरी पॉसिबल. अगर तो आज पेशेंट कहते हैं कि भी हमें स्कैन कराना है, फॉर एन एग्जांपल अगर मैं किसी पेशेंट को कहता हूँ मैंने PET CT स्कैन कराना है, Yeah. I can get it done the very next day or in fact today as well. Yeah. One second, doctor, we have a speaker here. Yes. हाँ जी बताइए. सर एक क्वेश्चन है मेरा. हाँ जी. कीमोथेरेपी पेनफुल कितना तक होता है? अच्छा, he wants to know कि कीमोथेरेपी क्या पेनफुल होता है और उसका सेशंस कितना लंबा होता है. So कीमोथेरेपी एज सच पेनफुल नहीं होता क्योंकि वो आपके मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट डिसाइड करते हैं कि भी आपको कितनी डोज देनी है और कैसे देनी है. इसमें कोई पेन नहीं होती. जितनी पेन एक नॉर्मल कैनुला लगाने में होती है वही पेन होती है, इससे अलग कुछ खास पेन नहीं होती. प्लस कितने सेशंस होने नहीं होने वो डिपेंड करता है कि कहाँ का कैंसर है. फॉर एन एग्जांपल अगर लंग कैंसर की हम बात कर रहे हैं उसका एक डिफरेंट प्रोटोकॉल है, ओवेरियन कैंसर का डिफरेंट प्रोटोकॉल है, ब्रेस्ट कैंसर का डिफरेंट प्रोटोकॉल है. सो वो हर ओरिजिन ऑफ द साइट एंड
साइज के हिसाब से वेरी करती है आपकी कीमोथेरेपी। तो उसके Okay. सेशंस ऐसा नहीं है कि आज मैं कह दूं कि नहीं 1 सेशन लगेगा, ऐसा नहीं है। Okay. इट कैन बी 4 सेशंस, इट कैन बी 6 सेशंस, और देयर आर दोस पेशेंट्स who keep on taking maintenance therapy as well for 2 years or 3 years as well. तो वो हर एक Okay. का अलग अलग है। Right. So, doctor, tell me, when I go and go and see an oncologist, मुझे क्या questions हैं जो मुझे I need to ask my oncologist? मुझे क्या पूछना चाहिए? सो आई थिंक इसको बेटर है हम एग्जांपल थोड़ा सा लेके चलते हैं। अगर आप हाँ जी. हम एक लंग कैंसर लेके चलते हैं, तो अगर कोई मेरे पास पेशेंट आता है लंग कैंसर पे, तो मेरी Okay. जॉब ये होगी, आई एक्सप्लेन हिम वेदर दिस इज अ स्टेज 1, 2 और 3 और 4 कैंसर, क्योंकि हर एक स्टेज पे जो ट्रीटमेंट मोडेलिटी है वो डिफरेंट हो जाएगी। सो सबसे पहला इसके अंदर हमारा आता है स्टेजिंग का वर्कर। जैसे ही Okay. हमारे को ये क्लियर हो जाता है कि भी फॉर एन एग्जांपल लंग कैंसर का स्टेज 4 कैंसर है, तो इसके अंदर स्ट्रेट अवे हमें कीमोथेरेपी और उसके साथ साथ अगर हमारे पास कोई टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी अवेलेबल है तो हमें वो यूज करनी चाहिए। ये मेरा काम होएगा डिसाइड करना और आपको ऑटोमेटिकली कम्युनिकेट करना कि भी आपका लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितना होएगा, आप कितना इस बीमारी का अगर इलाज करेंगे तो कितना जिएंगे, अगर नहीं करेंगे तो कितना जिएंगे। Okay. दिस इज द मेन थिंग अ पेशेंट वांट्स टू नो कि सर आप मेरे को बेस्ट ट्रीटमेंट तो कर दोगे, लेकिन ये बताओ मैं जीऊंगा कितना और मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसी रहेगी। सो वो मेरे अरीना में आएगा कि मैं उनको कैसे एक्सप्लेन करता हूँ, एंड वो ऑटोमेटिकली एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट आपको खुद ही बता देगा। आपके जो क्वेश्चन होने चाहिए वो ये होने चाहिए कि सर ये आगे हमारे तक आएगा या नहीं आएगा, क्या अगर किसी को मेरा ब्रेस्ट कैंसर है या किसी को ओवेरियन कैंसर है, क्या ये फैमिली में मतलब उस पेशेंट की डॉटर को या पेशेंट की सिस्टर को वो रिस्क पे है या नहीं है। तो ये डिस्कशन फैमिली की तरफ से आनी चाहिए मेरे पास, जो कि नहीं आती है क्योंकि अवेयरनेस ही नहीं है। बिल्कुल. सो अभी ये काम भी मैं ही कर रहा हूँ, जब मैं ही उनको बताता हूँ कि ओके नहीं आप जाओ जेनेटिक टेस्ट कराओ, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू। मैं नहीं चाहता कि आपकी मतलब पेशेंट के साथ साथ मैं बाद में जाके आपका ट्रीटमेंट भी शुरू करूँ। Right. I want you to be live a very happy and a healthy life and free of cancer. Right. नहीं, so you're very right about this, doctor. But tell me, तो जैसे आपने बताया कि मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट क्या करते हैं? What is all हम डिसाइड करते हैं एज पर द लेटेस्ट गाइडलाइन कि एक कैंसर के अंदर बेस्ट कीमोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी कौन सी अवेलेबल है, नंबर 1 आफ्टर द मेकिंग ऑफ डायग्नोसिस। सो एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट इन्वॉल्व हो जाता है पेशेंट के फर्स्ट सिम्टम से। फॉर एग्जांपल अगर कोई फीमेल मेरे पास आती है ब्रेस्ट लम्प के साथ, तो वहां से उनको ट्रीटमेंट लाइन तक पहुंचाना, ट्रीटमेंट कंप्लीशन तक पहुंचाना, उस बीच में उनको नेविगेट करना, दैट इज माय जॉब। Okay. At the end of the day, I am there to cure that particular cancer if the stage is early, and if the stage is advanced, then जो हमारा इंटेंट होता है वो केयर का आता है और क्वालिटी ऑफ लाइफ का ज्यादा डिस्कशन होती है। Right. ये एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट ही डिसाइड करता है। Right. So will you say कि nutrition is important in our day-to-day lifestyle, right? So आप थोड़ा सा न्यूट्रिशन के ऊपर, yes, a little balanced nutrition के ऊपर can you throw some light? तो स्टडीज जो है हमारे पास उसके अंदर ये प्रूवन है, अगर आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जितना ज्यादा कंज्यूम करते हैं, अपनी रेगुलर डाइट में इन्वॉल्व रखते हैं, उतना ही आपका रिस्क ऑफ कैंसर डेवलपमेंट कम होता है। नाउ बाय सेइंग दिस आई डोंट मीन कि जो पेशेंट्स नॉन वेज खाते हैं उनका रिस्क ज्यादा है। नॉन वेज के अंदर एक होता है रेड मीट। Okay. उसमें कुछ स्टडीज हुई हैं कि भी जो पेशेंट्स रेड मीट खाते हैं उनका कुछ कैंसर के इंसिडेंस ज्यादा होते हैं, बट व्हाइट मीट में इतना नहीं होता। जैसे सी फूड में इतना नहीं देखा गया है, या जो और व्हाइट मीट होते हैं उसमें नहीं देखा गया है। थोड़ा सा जो प्रीपॉन्डरेंस यानी कि थोड़ा रिस्क ऑफ कैंसर है वो रेड मीट के साथ ज्यादा देखा गया है, बट एक वेल बैलेंस्ड हेल्दी न्यूट्रिशन डाइट without any fat and less and appropriate amount of carbohydrates along with high protein will definitely help you live a better lifestyle, and automatically it will make you healthy and fit. As much as you are fit and healthy, I'm happy with that. If you are in the obese category, then I think you should revert back to non-obese. I know. No, I totally agree, because जितने भी episodes हमने अभी तक किए हैं, we have always been harping about
that we need to have a balanced nutrition diet because it's our diet which actually takes care of a lot of our problems. और हम हर एपिसोड में डॉक्टर भानु is always stressing on it and every doctor that we have कि हमारे को actually balanced nutrition diet and having the right percentage of your carbohydrates, proteins, fats and all needs to be monitored. And this is, I think, the base to any problem that we are having into our body. Absolutely. Yeah. So, Dr. Bhanu, I would like to know, how does actually cancer affect kidney? It's like, how does it affect? Cancer affects kidney in two broad ways. One is directly kidney suffers from cancer, in the sense you have kidney cancer. And the other way it is because these drugs are very, if you say in layman's language, these are very strong drugs. And once you give these kind of drugs, they have their own set of side effects. So if you have a huge burden of cancer with you and you start on chemotherapies and you start on multiple other injections to cure your cancer, there are always a possibility that all of this waste that gets generated has to go out through kidneys most of the time. So if your kidneys are not so healthy, especially when you're elderly, if you're diabetic, if you have some other reason for having a kidney problem and you get cancer, this treatment that Dr. Sarin offers works very well if your kidneys are, help you to excrete all this waste. So for example, I'll give you an example called a syndrome called tumor lysis syndrome. So we have a lot of heavy burden of cancer in your body, and once you start treatment, all of this waste has to be thrown out by kidneys. So many a times if the burden is too much, the kidneys get choked with this toxic waste, and sometimes they face the damage, and this damage can be so devastating that you might land up in dialysis and other problems. For example, we also have multiple myeloma. So this is one of the cancers that you need to be aware of because it directly affects kidneys and indirectly also affects kidneys. Yes. So right. Yes, so when it affects both ways, so with the treatment sometimes these changes revert back, and with the support of the nephrology department, if there are any patients who need their cancer therapy, because you have to weigh the balance. Because if you don't give cancer therapy, the cancer will spread and the life will be in danger. So with nephrology department support, where the patient might need dialysis and other supportive care, so the department work hand in hand so that the patient gets the best of outcomes. Yes. I think we have a caller here. He's trying to connect, but I think वो connect हो नहीं रहा है. I think there is somebody trying to call us for a question. It's That's not okay. So many a times, moving on, so many a times this happens is a very devastating, in a sense, a very dangerous symptom that a patient sometimes get, and both me and Dr. Sarin faces this very often, is the red color urine patient starts passing. So the first thing that comes to their mind is sometimes, do I have a cancer? So we need to be aware that this could be a symptom of cancer. Many a times this could be as simple as a urinary tract infection, but it could be a symptom of cancer, especially in an elderly male. This could lead you towards cancer, and I'm sure Dr. Sarin can take over from here, that these kind of symptoms are very common in bladder, prostate and other TCC sort of cancer. Okay. I think what Dr. Bhanu has said, it is absolutely spot on. Yeah, hello. Hello, ma'am. हाँ जी, पूछिए. Sir, my mother has kidney cancer, and the color of her urine has also burnt. Okay. Yeah, so doctor, they want to know that her mother has kidney cancer, and the color of the urine is red. We just started on the same. Yeah, we just topic started 30 seconds back, and I think Dr. Sarin was answering the question. Okay, so see, there are two ways, and Dr. Bhanu has said very nicely and comfortably that there are two ways. Either the cancer can be of the kidney origin, कि भाई कैंसर किडनी से ही बन के आया, या फिर कोई ऐसी चीज जो किडनी को इम्पैक्ट कर रही है कि कैंसर का बर्डन इतना ज्यादा है कि भी किडनी ढंग से काम नहीं कर पा रही. ओके. और थर्ड पॉसिबिलिटी होती है, वो मैं लास्ट में बताऊंगा. तो पहली दो पॉसिबिलिटीज को कर लेते हैं डिस्कस. तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी कि अगर कैंसर किडनी का ही है,
अगर कैंसर Okay. किडनी का है तो आपको एंटी कैंसर ट्रीटमेंट ही बचा सकता है और कोई सॉल्यूशन नहीं, Okay. along with the support of dialysis, क्योंकि इधर से डायलिसिस विल कीप ऑन वर्किंग आर्टिफिशियली टिल द टाइम जब तक मेरी एंटी कैंसर मेडिसिन काम करती है। Okay. पॉइंट नंबर 1 का आंसर ये। पॉइंट नंबर 2 कि अगर बॉडी में ट्यूमर बर्डन इतना ज्यादा है और किडनी शट डाउन होगी तो कुछ स्पेसिफिक कैंसर्स होते हैं लाइक ब्लड कैंसर जिसमें एक्यूट ल्यूकीमिया आते हैं, उनका ज्यादा रिस्क रहता है ऐसी टेंडेंसी क्रिएट करने का जिसको हम कहते हैं ट्यूमर लिसिस सिंड्रोम। Okay. ये प्रिवेंट करना एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट का कर्तव्य है और धर्म है कि भी पहली बात तो दिक्कत आए ना, लेकिन अगर आए तो फिर डॉक्टर भानु उसको हैंडल कर ले। Right. सो एंड थर्ड एंड फॉरमोस्ट जो लास्ट पॉइंट में कह रहा था, सी जब भी ऐसी सिचुएशन आती है कि जब एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट को रियलाइज होता है कि भाई वो किडनीज पे स्ट्रेस नहीं डाल सकता और किडनीज को बचाना है, क्योंकि हमारे पास कई पेशेंट आते हैं जिनकी ऑलरेडी नेफ्रेक्टमी हो चुकी है, यानी कि किडनी रिमूव हो चुकी होती है, वो एक ही किडनी पे अपनी लाइफ स्पेंड कर रहे होते हैं। तो उनके केस में हम एक स्पेशल स्कैन कराते हैं जिसको हम कहते हैं DTPA स्कैन। उस DTPA स्कैन के साथ अगर वैल्यूज हमारी फेवर में आती है तो हम आगे कंटिन्यू करते हैं थेरेपी, प्लस हम डॉक्टर भानु को मैसेज पहुंचाएंगे कि भाई हम ये करने वाले हैं, तुम मेरे को क्लियरेंस दो। और अगर डॉक्टर भानु भी कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपकी क्लियरेंस है, तब हम जाके वो ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। सो ये वाली जो कॉल्स होती है ना हमारे लिए, वी हैव टू वे इन द साइड इफेक्ट एंड द इफेक्ट बैलेंस हियर, एंड दैट इज हाउ वी मूव अहेड इन द ट्रीटमेंट ऑफ किडनी कैंसर। प्लस जब तक ये इंफॉर्मेशन इतनी हमारे पास नहीं थी तब तक तो ये सब चलता रहता था अपने आप ही, लेकिन आजकल क्या हो गया, किडनी कैंसर का जो ट्रीटमेंट है इट इज प्योरली बेस्ड ऑन टारगेटेड थेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी मोस्टली। तो इसमें रोल ऑफ कीमोथेरेपी काफी कम हो गया और कीमो ही कुछ स्पेशल हमारे सॉल्ट्स होते हैं जो किडनी से सिक्रीट होते हैं, वो अब इसमें यूज नहीं होते, अब ज्यादा यूज होती है इम्यूनोथेरेपी इसमें। Okay. Immunotherapy is one of the most advanced therapy that we give, which does not affect kidneys altogether. Okay. So these are, you were talking about, so these are one of the newer therapies in cancer and kidney diseases. Okay. Yes. Right. And doctor, I would also like you to stress a little on, breast cancer. Because कई बारी women don't know कि इसको हम डिटेक्ट कैसे करें। हम ऑलरेडी इतनी अवेयरनेस और इतना कुछ इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है, बट स्टिल there is a lot of women don't know how to do it. So can you just throw a little light over it? तो सबसे पहले तो मैंने बताया था फैमिली हिस्ट्री। Right. अगर आपके फैमिली में कोई हिस्ट्री है, आप तो पहले मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से जाके मिलो, वहीं पे आपका आधा काम खत्म, आपको कुछ नहीं करना, आपने बस पेट्रोल डालना है या डीजल डालना है और आपने पहुंचना है। उसके बाद पार्ट शुरू हो जाएगा मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट का। ये तो हो गया नंबर 1। अब है कि भी नहीं जी, हम तो अभी मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना चाहते, तो इट मींस कि यू नीड टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम बाय योरसेल्फ, व्हिच इज वेरी गुड, क्योंकि नाउ ऑल द डेवलप्ड कंट्रीज इन विद द लेवल ऑफ लिटरेसी दे हैव, दे इंडिपेंडेंटली असेस इट देन दे विजिट द ऑन्कोलॉजिस्ट। अगर ऐसा इंडिया में हो जाए तो बात ही क्या है। सो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको अपना सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना होता है। आपका कोई भी ऐसा चेंज जो ऐसा लग रहा है आपको 7, 8, 10 डेज के अंदर थोड़ा डिफरेंट आ रहा है और वो बढ़ता जा रहा है, एंड इट आर्किटेक्चर जो आपकी ब्रेस्ट की कॉम्पोजिशन है उसमें कुछ चेंज आ रहा है, या कुछ कहीं पे कोई लंप या स्वेलिंग फील कर रहे हैं, आप भागो। आप वेट नहीं करोगे, आप जाएंगे और डॉक्टर्स के पास और आप फटाफट दिखाएंगे। क्योंकि इशू क्या होता है, इशू होता है कि उस चीज को because of some taboos in our society, females are not very open in discussion regarding any breast lump or any genital issues. उस चक्कर के अंदर जो वो लंप छोटा सा होता है ना, वो स्टेज 1 से सीधा स्टेज 4 चला जाता है, and then the expectation of the families are still the same regarding the cure. अब वो वर्चुअली इम्पॉसिबल हो जाता है फैमिलीज की एक्सपेक्टेशंस और मेरी एक्सपेक्टेशंस को बीच पे एक लेवल पे लाके मैच करना। सो सिंपल है, जैसे ही कुछ भी एबनॉर्मल फील हो रहा है इन योर बॉडी, प्लीज विजिट अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट और अ नियर बाय डॉक्टर।
ideally आजकल जो physicians भी हैं, they are doing a very good job. General surgeons are doing a very good job. They will guide you the best when to refer. Or if you want to come, you can still straight away come to a medical oncologist and he will guide you what else he can do. Absolutely. And as they say, it's better to be preventive, and take Absolutely. a call at the right time. Yeah, you have Absolutely. seen Angelina Jolie. So she is a live example in our community that she is having a BRCA cancer, which is a gene mutated, and she got her both the breast removed, and then the reconstruction of the breast was done, and now she's doing all right. Good. So just at the right time, it is very important to take a call. Yeah. So, doctors, it has been absolutely wonderful. So, how would you like to wrap up today's conversation? I think let first Dr. Bhanu say something, then I'll complete it. I would like to cover one very small but the most important aspect in when these kind of therapies are involved, and we face this very often and don't address the elephant in the room, is the cost that is needed for the treatment for cancer and the burden of the cost that is there on the family. Yes. Awareness is very, very important of the cancer diseases, but at the same time you need to be aware that there are ways to make yourself insured for the cancer and other things. So if you have a family history, if you are yourself suffering, or maybe you don't have both of them, it is better to be on the side where you're able to insure yourself. Like you take medical insurance, and so there are many insurances which will cover your cancers as well. And because these therapies, newer therapies, are very costly, we have so many things to offer, but most of our especially in India, are not able to afford. So the affordability also becomes very, very important. Catching them in the early stage so that we can, give you a cure at lower cost. But at the same time, sometimes this is not possible to catch them at an early age because of awareness and other social taboos, as discussed by Dr. Sarin. We need to, I believe this is our part of the job, where we need to tell them that you need to be financially secure as well, so that you are able to avail the best of facilities around. That is one aspect which I believe should be addressed right in the first or second visit that the patient comes, because these are costly therapies. Second is, when cancer comes in, you need to fight the cancer. You should never be in depression. To fight the cancer, you need a healthy body, not just kidney, liver, heart. The other organs have to be strong to fight the cancer. So make sure that you go under regular visits to your physician, your medical oncologist, and make sure that you stay healthy. Balanced diet and nutrition we have emphasized all the time, so that goes without saying. So these are the few things which I would like to comment on at the end of to wrap up the session. As Dr. Sarin can take over. So absolutely, Dr. Bhanu has said rightly that the budget does play a very important role. So let me briefly just give you an idea as well. We have a good amount of support programs in our immunotherapy and targeted therapy, where we can offer like 1+2. I mean, if a patient can buy one drug, then the company will help them to provide 2 drugs entirely free of cost. And this is happening especially in India as well, because in view of our developing nature and because of a low per capita income as per the developed nations. So यहाँ पे हम रोज 1 या 2 या 3, it doesn't matter, जितने भी patients हैं, जब भी help चाहिए होती है उनको budgeting के अंदर, finance में, we talk with the companies and they definitely will help you. एंड अगर आप जल्दी पकड़ लोगे कैंसर तो मेरा काम और आसान हो जाएगा. मैं आपको क्योर की बात करूंगा, फिर मैं कंट्रोल की बात नहीं करूंगा. So definitely awareness is must in winning this silent upcoming pandemic that we are going to face in like next 10 years, definitely. So I think it was amazing. I think the doctors, you have done such a great job. And I mean, it is totally, I mean, like the information that you gave. और सबसे बड़ी बात है, आपने उसको इतनी easily और इतने अच्छे शब्दों में समझाया है that our viewers are going to be, they will benefit from today's session and conversation. And and I would like to tell the viewers कि we have some amazing doctors. आपने देखा है कि दोनों बहुत amazing doctors हैं. Whenever you want to connect, I will leave their numbers with the video that we are uploading. And definitely, if you have any problem or if you have any doubt also, please go and visit the doctors in the at the right time, so that a lot of problems in the future can be
you can await them. So guys, till then, it was absolutely amazing. Thank you so much, doctors, for being here, and it was absolutely amazing having both of you. Thank you, Thank you so Shalini, much for for giving having us the us. platform to share our knowledge and spread awareness. And that's our motto during this webinar series: that spread awareness of diseases and catch them early so that you can treat them well.